So now we are going to study about the usage of bacterio bacteriophage usage of bacteriophage in genetic engineering. Genetic engineering. Usage of bacteriophage usage of bacteriophage in genetic engineering. So पहले हम पढ़ेंगे what is genetic engineering. What is genetic engineering? So genetic engineering is defined as a set of techniques set of techniques uh, which is used which are used to modify modify DNA modify DNA to form desirable products. So genetic engineering is a set of techniques which is used for to which are used to modify DNA to form desirable products, in which it is a set of techniques in which DNA is altered, or which are used to modify DNA to form a desirable products. Suppose this we have to make, such as in the genetic engineering for bacteriophage, some example, like it is used for getting more desirable products, getting more replicated or more clones means the identical copies. And usage of bacteriophage in genetic engineering is also used for making insulin, which is a medicine. So insulin, this is a gene of insulin insulin. The gene of insulin is a desirable product, so it is also known as gene of interest. Gene of interest. Gene of gene of interest. So इंसुलिन हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज से बनता है बाय इट्स रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे. तो इंसुलिन का जीन इज ऑल्सो कॉल्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट इज अवर डिजायरेबल प्रोडक्ट. सो इट इज नेम्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट. सपोज ये एक ये सेल है जिसमें it is a bacteriophage. Suppose it is a bacteriophage in which its DNA is present, its genome. So इसमें एक ये genome पड़ा है. So इस genome को, suppose this is a insulin gene. Okay, this is the phage. This is a phage. P, I am preparing for phage, and this is insulin. Okay, this is the insulin. So now this part which I am marking as blue, so this part of the insulin is I want to recombine into this. So by recombining the gene of insulin and the gene of phage, जीन, और वी कैन से जीनोम ऑफ फेज, डीएनए, दोनों का डीएनए को हम रिकम्बाइन करवा रहे हैं. सो इट बिकम एज रिकम्बाइन. सो दिस नाउ this has been recombined. The recombination of DNA, recombination
recombination of DNA. Okay, recombination of DNA. To recombine the DNA, the technique which is called to recombine recombine DNA of two of 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 two other sources. To recombine the DNA of दो मुख्तलिफ सोर्सेज का DNA रिकम्बाइन करने को की टेक्निक को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is a technique which is used to recombine the DNA of two other sources. Two other sources कैसे? यहाँ पर एक phage का DNA हमारे पास हमने लिया. The DNA of the phage, sorry, the here we have taken the DNA of the phage. ये देखो DNA of phage का, और ये इतना हिस्सा DNA of the insulin. इन दोनों को हमने रिकम्बाइन करवाया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA करवाया, तो इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट DNA या रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA. नाउ दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA या रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA. और इस रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA की टेक्निक को करवाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. अब नाउ दिस रिकॉम्बिनेशन के लिए जो हमारे पास एक एंजाइम जो एक इस डीएनए की जो इस पार्ट को तोड़ने के लिए जो यूज़ हुआ होगा फॉर प्लेसिंग जो हमारे इस जीन को यहाँ पर जिसने प्लेस किया होगा बाय प्लेसिंग, और इस जीन को जो हटाया होगा, दिस इज डन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस. हम कह सकते हैं nuclease endonuclease. So endonuclease is the enzyme which is used to make a place for recombination of DNA. Is an enzyme which is used to for the restriction is used or responsible for making a place in a cell to place our gene of the interest. Means हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस किया. दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वायरल जीनोम. हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसने जगह दी, उसने प्लेस दी. सो वो दिस इज डन बाय द एंजाइम कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ओके, दिस इज डन बाय द एंजाइम कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. नाउ दिस recombinant DNA, जो ये recombinant DNA है अभी, now this recombinant DNA will called as GMO. ये जो होगा ये हमारे पास अभी कहलाता है ये सेल है. हमने पढ़ा था कि ये सेल है बैक्टीरियोफेज का. ओके, सो दिस इज द सेल ऑफ बैक्टीरियोफेज, यू नो दैट. So this this bacteriophage cell is now known as GMP. GMP means I'm writing here genetically modified phage. GMP means genetically modified phage.
or if there is GMO, so that means GMO, if there is, so it means genetically modified organisms or genetic modified phage. So we are discussing here about the phage. So it is known as genetically modified phage. Now this genetically modified phage will undergo replication. ये it will make more GMP. It will make its clones mean identical copies. It will make more replication. It will do replication, then replication, and by this replication in the phage, it will do in its phage. ये phage में ही होगी this GMP. I'm marking in like a cell. So this GMP has been replicated. ये replication हो रही है and making many copies, and these copies means the bacteria. We know that at a time in 18 to 20 minutes bacteria are making 200 copies, 200 phages. And in bacteriophages uh, in bacteriophages हमारे पास बनती है पर 18 मिनट्स या 20 मिनट्स के बीच में 200 क्लॉन्स, 200 कॉपीज, 200 प्रोजेनी। एंड बैक्टीरिया की बनती है 20 मिनट्स में टू प्रोजेनीज इन 20 मिनट्स, टू प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरिया एंड 200 प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो 20 मिनट में इतने बनते हैं। दिस इज फॉर बैक्टीरिया and this is for bacteriophage. Okay, now this replication, जब ये replication होगी then the DNA got isolated. जब ये replication होगी, after the replication the DNA will be isolated. Isolation of DNA से uh, the proteins, structural components which are used for, which are beneficial for making another clones, making the copies, making the progeny of phages. So this is used for this DNA by this replication. बहुत सारी copies बनती है and in the end these are by the lysis of the cell wall of the phage of the cell, bacteriophages की जो cell होता है उसकी lysis की वजह से these are released और per 20 to 18 to 20 minutes 200 bacteriophages are formed. New daughter phages are formed in 18 to 20 minutes. Okay, so now uh, we are discussing how this genetically bacteriophage is used in genetic engineering uh, to infect our body. So now we are going to study about the usage of bacteriophage in genetic engineering and how this bacteriophage is used to protect our body from the bacteria which are infecting our cells. So now consider this a bacteriophage. Here is its DNA. Okay, this is a phage. This is its DNA. By this is suppose a gene of interest of the desirable products, not insulin, but any desirable products. Sorry. Okay, suppose this is a gene of gene of gene of interest. This is the gene of interest, and now this part of the gene, the green part of the gene, and this are combined in a phage and hence we made it as this. Now again, this is called recombination. I've taught you before that this is called the recombination of DNA of two other sources. Recombination of two other sources. Here I've make this is recombination of two other sources, and this is done by the technique called recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. This is a phage here. This is its DNA, and it's the gene of interest of desirable product. What we have to form.
So if we are using it for protecting human, so this will be of human gene. It will be a human gene of interest. Okay, so these are recombined, and this called recombination, recombinant DNA, and this we can say GMP, genetically modified, genetically modified uh, phage. Now this is genetically modified phage. Now this will be, this genetically modified phage will be injected, in a human body, in the human body, will be injected in a human body. Now this GMP will be injected in a human body by using a vector. वेक्टर वो चीज़ है जो जीन को या किसी भी फेज को डिलीवर करे, वर्क एज अ व्हीकल, जो डिलीवरी का काम करे फ्रॉम द फेज टू द बॉडी, जो उसके डीएनए को, जो उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जीएमपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फेज, उसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर. So here I can write, by the help of vector, the GMP, genetically modified phage, is injected in a human body. Injected in a human body. Now further in the human body, it will not, it will only infect the bacterial cells, because we know that bacteriophage is a host specific. It will only infect the infected cells, or not infected cells, it will only infect the E. coli phages, or is a Colaphages are some of the bacteria, and these are also present in a human body, which are infecting in cells. So bacteriophage, when will be injected in our body, its genome, the genetically modified phage genome, which is genetically modified genome, जो genetically modified genome जो DNA में recombination DNA, recombinant DNA बनाया, that will be work as weapon. The genome, the genome will work as weapon, will work as weapon. जो उसका जीनोम है, जब ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट हुआ, तो उसका जीनोम in our human body will act as weapon and kill the bacterial cells, kill the bacterial cells. जब ये इसका जीनोम, द रिकॉम्बिनेंट जीनोम जो होगा, डीएनए, when it is injected in a body, it will work as a weapon for bacteria, for bacterial cells. It will work as a weapon for bacterial cells, and it will kill the bacteria cells. It will kill the bacterial cells, and it will not affect, this genome will not infect body cells, huh? body cells और अदर माइक्रोब्स, जो अदर माइक्रोब्स हमारी, जो मुख्तलिफ माइक्रोब्स होते हैं, अलग अलग माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, उनको भी इन्फेक्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज़ अ होस्ट स्पेसिफिक, because it is a host specific, it is a host specific. सो ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, इसी वजह से ये सिर्फ बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, और बाकी किसी सेल पे नहीं करता. सो इसी तरह, दिस इज़ द वे हाउ द genetic bacteriophage are used in genetic engineering by protecting our body from bacteria and many other things. So the first step we have studied was the first step that we have studied was this one, that bacteriophage की genetic engineering में first use क्या होता है. So the first use of bacteriophage हमारे पास था कि यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन भी होता है. एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन के लिए ये क्यों होता है, बिकॉज बैक्टीरियोफेज
उसकी रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जो रेप्लिकेशन उसकी एक एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। कि वी नो दैट, वो मैंने बताया था कि 18 मिनट्स में 200 प्रोजेनी बना सकता है वो बैक्टीरियोफेज। तो बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन, gene of insulin is used in the is integrated, is recombined with the DNA of the bacteriophage, और इस बैक्टीरियोफेज को किसी बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है, इंजेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। बैक्टीरियल सेल्स में उस वो अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट करके वो अपनी इतनी सारी कॉपीज़ बनाता है, बाय जो कॉपीज़ बनती हैं उसको वो यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करके इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। बाय द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, तो बैक्टीरियोफेजेस में जो जीनोम होगा वो होगा रिकॉम्बिनेटेड डीएनए, और डीएनए होगा किस किस का, बैक्टीरियोफेज का, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन का था। इसी तरह हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। और अनदर वे जो हमने पढ़ा था वो